Good morning, students. Welcome. We start with the chapter of science, chapter number 7, Conservation of Plants and Animals, part 1. So let's see. First, in this chapter is our introduction. A great variety of plants and animals exist on earth. You all know that we have a large variety of plants and animals existing on the earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Yes, it's true. For the survival of mankind, it is essential that they should be conserved, plants and animals. National parks, sanctuaries, and biosphere reserves are maintained to conserve forests and wildlife. So, what is done to protect the forest and the wildlife? National parks are made, sanctuaries, and biosphere reserves. And what are all these? We will be studying in this chapter number 7. Now, students, our first topic is deforestation. What is deforestation? Now, before this only we discussed that a great variety of plants and animals exist on earth and they are essential for the survival of the living organism, or we can say our mankind. So today a major threat to the survival of these organisms is deforestation. एक बहुत बड़ा खतरा है जो ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उनके लिए सबसे बड़ा जो डेंजर है वो है डिफॉरेस्टेशन. Now what is deforestation? This is the definition. The clearing of forests and using the land for other purpose is called deforestation. फॉरेस्ट का कट करना, उनको ट्रीज को काट के लैंड को दूसरे पर्पसेस के लिए यूज करना इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. एंड व्हाट आर द कॉजेस फॉर डिफॉरेस्टेशन? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए? पहला है प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. लैंड का यूज करना कल्टीवेशन के लिए, लैंड यूज करने के लिए लोग ट्रीज को काट देते हैं. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज दे डिस्ट्रॉय द ट्रीज. Using wood as fuel or making furniture etc. Making furniture, wood को fuel की तरह use करना, इस सब के लिए भी trees को काटा जाता है. But all this leads to deforestation. अगर trees हैं तो हम हैं, but if you go on cutting trees, what will happen? This will affect us, mankind, the survival of mankind. The natural causes of deforestation are forest fires and drought. These are all the human causes. And what are the natural causes? Forest fires. आप देख सकते हैं नीचे फिगर में forest fire. कभी कभी forest में fires हो जाती है, बहुत ही गर्मी, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से forest में आग लग जाती है. They are known as forest fires and it goes on spreading. And even the droughts condition जो होती है, this you can see here, सूखा पड़ जाना. So all these leads to deforestation. Now, what are the consequences of deforestation? Consequences means उसके effect क्या होंगे, उससे हमें क्या नुकसान होगा? नुकसान तो होना ही है. Let's see. The consequences of deforestation are increase in the temperature and pollution level on the earth. Earth पे temperature बढ़ जाएगा अगर ट्रीज कट किए जाएंगे. वो कैसे? क्योंकि ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा एंड दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, जो हम पहले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. देन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. यस स्टूडेंट्स, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल. ग्राउंड में भी पानी होता है, जो कुएं वगैरह खोदते हैं ना, उनमें ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है, तो उसका भी लेवल नीचे जाता जाएगा बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. पूरे ecological बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ जाता है. डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्राउट. रेनफॉल्स कम हो जाएगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बचपन से जो एसेस पढ़ते आ रहे हैं ट्रीज पे, the trees are helpful in bringing the rain and all that. Rains को लाने में trees help करते हैं. So this will lead to the decrease in rainfall and which will automatically lead to drought conditions. सूखा पड़ जाता है. Soil erosion and decrease in soil fertility leading to desertification. Soil erosion आपने previous standards में भी पढ़ा है. Soil roots, जो upper layer of जो nutritious layers of soil होती है, वो पानी से, running water and because of winds and all that, they are carried away to long distance and so the soil gets eroded. And the roots of trees can hold the soil particles very firmly. So they are helpful in protecting the soil. In absence of trees, soil erosion will take place. Decrease in soil fertility, soil की fertility कम हो जाती है, which will lead to desertification.
जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, कुछ वेजिटेशन ग्रो करने लायक ही नहीं होगा, तो इट विल लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन, मींस डेजर्ट एरियाज बढ़ती जाएंगी, जो हमारे अर्थ के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए सही नहीं है. Decrease in the water holding capacity of the soil leading to floods. So plant water की soil की जो water holding capacity होती है वो कम हो जाती है. So decrease in the water holding capacity of the soil, and the what happen, the movement of water from the soil surface into the ground is reduced. जो movement है पानी का ground surface में वो reduce हो जाता है, and so there are floods. This leads to the floods. Now students, what is drought? Drought का मैंने आपको बताया सूखा पड़ जाना. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. Trees का कम होना और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाना, बिकॉज ट्रीज ही हैं एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और कोई ह्यूमन बींग्स कभी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो एक्सेल करते हैं. तो अगर लेवल मेंटेन करना है कार्बन डाइऑक्साइड का तो ट्रीज का होना जरूरी है. सो अगर ट्रीज कम मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा. This will lead to the global warming as CO2 traps the heat rays reflected by the earth. ज्यादा CO2 मतलब हीट रेज ज्यादा ट्रैप होगी, क्योंकि CO2 की एक क्वालिटी है वो हीट रेज को ट्रैप करता है. अगर उसका अमाउंट बढ़ गया तो इट विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग. द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ disturbs the water cycle and may reduce the rainfall. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी इंक्रीज होगी, तो वाटर साइकिल जो एटमॉस्फेयर में वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड इट कैन रिड्यूस द रेनफॉल. तो रेनफॉल का आना रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो दिस कुड कॉज ड्राउट्स, एंड दिस कंडीशन विल लीड टू ड्राउट्स. ड्राउट कंडीशन, सूखा पड़ जाना, फिर खेती नहीं कर पाएंगे, पेड़ पौधे, सूखा पड़ जाता है उस जिस भी कंट्री में या जिस भी एरिया में, कोई भी डेजर्टिक रीजन्स में, तो बहुत ही तकलीफदायक होता है वहां के लोगों के लिए. नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन. व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? Removal of top layer of soil exposes the hard and rocky layers which have very less humus and air. जो soil erosion होता है ना, उसके में क्या होता है, soil का जो upper layer होता है वो निकल जाता है, तो जो नीचे का rocky layer है वो expose हो जाता है, hard layer होता है जिसमें humus कम होता है, moisture कम होता है, and as they are less fertile, soil becomes like desert. Soil किस में हो जाता है, desert के जैसा हो जाता है, and this term it is termed as डेजर्टिफिकेशन. इसलिए हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. जो भी फर्टाइल लैंड्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट होने लग जाती हैं, डेजर्ट्स में कन्वर्ट होने लग जाती हैं. Deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil, which we studied before. The movement of water from the soil surface into the ground is reduced. पानी का जो movement है वो भी कम हो जाता है. So there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. ये सारे जो consequences हैं वो किसके हैं, deforestation के हैं. Now students, let's see how we can do the conservation of forest and wildlife. Forest and wildlife can be conserved by setting up areas like biosphere reserves, wildlife sanctuaries, national parks, etc. इन सबको हम लोग सेटअप करके इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे वाइल्ड लाइफ जो है, पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, नेशनल पार्क्स बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना, एंड ऑल दीज डेफिनेशंस आर गिवन. पहले आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स? Biosphere reserves are large areas of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living there. Tribals जो वहाँ के जो एरिया में जो आदिवासी और ये सब रहते हैं वो सब कहाँ पे रह सकते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है, प्रोटेक्टेड लैंड होती है for the conservation of biodiversity. What do you mean by biodiversity? Biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. National parks. National parks are the areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. ये भी wildlife के लिए areas reserved होती है जहाँ वो freely सारे habitats को use किया जाता है. एक protected area होती है, जंगल्स वगैरह को national parks में convert कर दिया जाता है. Now, wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries are areas where animals are protected from any disturbance to them or their
हैबिटेट, दीज आर द एरियाज वेयर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, सिर्फ एनिमल्स होते हैं जहां उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और उनके हैबिटेट को भी डिस्टर्बेंस ना हो। ये तीनों फिगर्स भी आपको दिखाए गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसमें सब बायोडाइवर्सिटी रहती है, सारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ के ट्राइबल्स जो होते हैं, सारे प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। नेशनल पार्क होता है वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए होता है, एंड दे कैन यूज दैट हैबिटेट्स फ्रीली एंड freely they can use their habitats and natural resources, and wildlife sanctuaries especially for the animals. Now what is wildlife conservation? इसका मतलब क्या होता है? Wildlife conservation is the practice of protecting endangered plant animal species and their habitats in an effort to maintain the ecological balance. जो भी endangered means जो on the verge of extinction, ऐसे बहुत सारे plants and animals हैं जिनकी प्रजाति खत्म होने को आ रही है, जो अब लुप्त होने वाले हैं। यस, इनको हम एंडेंजर्ड कहते हैं, जो आगे चल के एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दे आर नोन एज एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उनको प्रोटेक्ट अगर नहीं किया गया तो आगे जाके, जैसे डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, कई सारे एलिफेंट्स प्रकार के थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो फिर उनको वापस रिट्राइव नहीं किया जा सकता है। तो जो अभी एंडेंजर्ड हैं, जो एक्सटिंक्शन की वर्ज, विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम ताकि उनकी प्रजाति बिल्कुल ही नष्ट ना हो। सो फॉर दैट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज डन, and through by maintaining them, by saving them, we can also maintain the ecological balance. Now how does the government conserve our forests and wildlife? Government कैसे conserve करती है? The government lays down rules, regulation and policies to protect our forests and wildlife. गवर्नमेंट भी काफी सारे रूल्स पास करती है, क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे तो फिर से ह्यूमन बींग्स का इंटरफेरेंस रहेगा ये सारी सेंचुरीज में। Besides, it also earmarks rich flora and fauna habitats as protected areas where the following activities are prohibited. ये सारी जो एरियाज है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, जैसे नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनमें ये सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती है। कौन सी एक्टिविटीज? They are cutting down of trees, grazing of cattle, hunting, plantation and cultivation, poaching. Poaching means illegally killing or capturing wild animals. वहाँ पे trees को आप cut नहीं कर सकते, it is a punishable offense. Grazing of cattle को disturb नहीं, grazing of cattle वहाँ पे allowed नहीं है, cattle को ले जाके वहाँ पे आप graze नहीं करवा सकते हैं। Hunting allowed नहीं है, even plantation and cultivation is not done over there, it is the natural resource, वहाँ पे सब कुछ natural होता है, वहाँ पे कोई disturbance नहीं किया होता है। And poaching is specially prohibited, that is illegally, if any killing or any capturing of animal is done, it is prohibited over there. So these all rules are laid down by the government. Now students, let's come to Biosphere Reserve. What is Biosphere Reserve? Biosphere reserves are large areas of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living there. We have just seen the definition. सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, इट इज अ एरिया, लार्ज एरिया, बहुत ही लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। What is biodiversity? Biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms found in that area. ये जो variety of plants and areas जो particular area में found होते हैं उसे हम biodiversity कहते हैं। So the Pachmarhi Biosphere Reserve consists of a national park called Satpura and two wildlife sanctuaries called Bori and Pachmarhi. एक Pachmarhi Biosphere Reserve है जो आपके चैप्टर में डिस्कस किया गया है। वो कहाँ पे है? इट कंटेन्स अ नेशनल पार्क, एक पूरा बायोस्फीयर है उसके अंदर ही नेशनल पार्क आ जाता है। उसमें एक नेशनल पार्क है जो सतपुरा नाम से है, एंड देयर आर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पंचमरी। So students, there is one also activity in your textbook. Find out the number of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves in your district, state and country. Record in table which is given in your textbook. I will just show you the map so you will get through it. See, this is the map showing the biosphere reserves in all over India. India में जितने भी biosphere reserves है, like in Gujarat you can see Run of Kutch. Yeah, in Gujarat we can see Run of Kutch. Pachmarhi you can see it is in MP, Madhya Pradesh. So all the biosphere reserves are shown here in this map. Even this Pachmarhi and Sundarban and all these Kanchan
then Zonga, Nanda Devi, Cold Desert. These all are the biosphere reserves in our India, all over India. And now you can see, especially for Gujarat national parks and sanctuaries of Gujarat, you can see in Kutch also there are so many these shown what we call national parks and sanctuaries. This pink star is for national sanctuaries, red star is for sanctuaries, and pink star is for national parks. They like pink one, you can see here Velavadar is given here, and in Gujarat we have Kutch Desert. Yes, in Chinkara Narayan Sarovar is a uh, sanctuary in the Gujarat. Wilderness, Dragandra, Nal Sarovar near to Ahmedabad. Yeah, you can see Ratan Mahal, Dhumkal. This Bansada is the national park. Yeah, so all these are the national parks and sanctuaries of Gujarat. You can go through the map. Yes, students, for both India and Gujarat. If anything is asked in exam, you can answer from this. 2, 3, if you are learning from this, then it's good. Now our next topic is flora and fauna. What do you mean by flora and fauna, pet? First of all, let's see the definition for that. Flora are the plants found in a particular area. जो भी plants हमारे particular area में find out होते हैं उसे हम flora कहते हैं. And fauna are the animals found in a particular area. Particular area में जो animals found होते हैं उन्हें हम fauna कहते हैं. तो दोनों मिला के हो जाता है flora and fauna. That is plants and animals को scientifically कहा जाता है flora and fauna. The flora of Pachmarhi consists of sal, teak is important tree of the Pachmarhi, wild mango, jamun, silver ferns, etc. All these are flora of Pachmarhi. The Biosphere Reserve में जो एक Pachmarhi बताया ना अभी आपको, कौन से Biosphere? Pachmarhi Biosphere Reserve में दो national parks हैं. That is Satpura National Park है और उसमें 2 sanctuaries है. That is Bori and Pachmarhi. तो वहाँ की जो speciality flora है वो teak, sal, wild mango, jamun, silver ferns, etc. And जो fauna है, the fauna of Pachmarhi consists of wild dog, cheetah, wolf, leopard, bluebird, barking deer, etc. All these are the fauna animals of Pachmarhi Biosphere Reserve. So I hope you understood what are flora and fauna. Students, our next topic is endemic species. Now this is important. What are endemic species? Very important topic. This can be asked in exams also. Endemic species are those species of plants and animals found only in a particular area and not found anywhere else. मीन्स एक्सक्लूसिवली वो उसी एरिया में फाउंड आउट होते हैं, आपको और कहीं नहीं दिखेंगे. वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, मतलब वो उस पर्टिकुलर एरिया को ही बिलोंग करते हैं और कहीं पे भी और किसी भी एरिया में हमको नहीं मिलते हैं, तो उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी. वो सिर्फ पंचमढ़ी में दिखेंगे, ऑल ओवर इंडिया में और आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे. Then bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are the endemic fauna of this area. Fauna means I told you they are the animals. So these are only found in Pachmarhi Biosphere Reserve. So you will find them nowhere else. So I will repeat once again. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. और कहीं भी नहीं मिलेंगे. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state, or a country. So this is called endemic species. Now, students, what do you mean by species? Species is a group of population which are capable of interbreeding. वो एक दूसरे के साथ interbreed कर सकते हैं. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with the members of other species. जो एक particular अपने स्पीशीज को ही बिलोंग करते हैं. दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ, दूसरे स्पीशीज के साथ. जैसे कुत्तों की प्रजाति होती है तो वो एक पूरी स्पीशीज है डॉग्स की, राइट. सो दे आर नोन एज स्पीशीज. मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. दे हैव ऑल द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड अप टू हियर endemic species. Yes students, next topic we will cover in our next video. For this video, this much only. Go through this video once again students. Thank you. Stay safe. Keep studying.